हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेसेस, मतलब NPPCD। मतलब ऐसा प्रोग्राम जो हमारी डीफनेसेस मतलब कि जो कानों के सुनने की क्षमता ख़त्म हो जाती है उसको कहते हैं हम डीफनेस। तो उसको किस तरीके से हमें प्रिवेंट करना है और कंट्रोल करना है हमारे इंडिया में, तो उसके लिए एक नेशनल प्रोग्राम को लाया गया, ठीक है, जो हमें प्रिवेंट एंड कंट्रोल करता है फ्रॉम द डीफनेस। नाउ स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन। Hearing loss is the most common sensory defect in human today. World over, it is the second leading cause of years lived with disability, the first being डिप्रेशन। ओके, हियरिंग लॉस जो है वो हमारी सोसाइटी में, हमारे ह्यूमंस लाइफ में बहुत ज़्यादा सेंसरी डेफिसिट है ह्यूमन बींग्स में। वर्ल्ड की यदि हम बात करें तो सेकेंड लीडिंग कॉज है हमारा ईयरली लिव्ड विथ डिसेबिलिटी में, और जो फर्स्ट बीइंग डिप्रेशन है। मतलब इसकी वजह से पर्सन और ह्यूमन जो होता है वो डिप्रेशन में जा सकता है। There are large number of hearing impaired young people in India, which amounts to a severe loss of productivity, both physical and economical. An even larger percentage of our population suffer from milder degree of hearing loss and unilateral one-sided hearing loss. Against the above background, the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, launched a pilot phase of National Program for Prevention and Control of Deafness from 2006 to 2008 in 10 states and 1 union territory in an effort to tackle the high incidence of deafness in the country in view of the preventable nature of this disability. हमने क्या देखा कि जो लार्ज नंबर ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड है यंग पीपल्स के अंदर हमारे इंडिया में, और बहुत ज़्यादा सीवियरिटी लॉस हो रहा है, प्रोडक्टिवली लॉस हो रहा है, ठीक है, फिजिकली भी और इकोनॉमिकली भी उससे पर्सन का लॉस होता है यदि उसका हियरिंग लॉस हो जाता है तो। एंड इवन लार्जर परसेंटेज ऑफ आवर पॉपुलेशन सफ़र फ्रॉम माइल्डर डिग्रीज ऑफ हियरिंग लॉस, ठीक है। एक साइड से मतलब एक कान से सुनने की क्षमता को भी कम हो जाना, ये हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इसकी वजह से जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसने एक पायलट फेज चलाया NPPCD के लिए। कब से कब तक? 2006 से 2008 के बीच में 10 स्टेट के अंदर, ठीक है, और कुछ एफर्ट्स किए जिसकी वजह से जो हमारी कंट्री में डेफनेस थी वो उसको टैकल किया और उसको प्रिवेंट किया। नाउ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड expansions. The program was a 100% centrally sponsored scheme during 11th 5-year plan. However, as per the 12th 5-year plan, the center and the states will have to pool in resources, financial norms for NRHM, mutuous. The program was initiated in year 2007 on pilot mode in 25th district of 11th states or UTS. The programs has been expanded to 192 districts and 20 states in the 12th plan. It is the proposed to expand the program to additional 200 districts in phased manner, probably covering all states and union territories by the March 2017. ठीक है, जो प्रोग्राम था ये 2006 से लेके 2017 तक गया था और 100% जो था सेंट्रल स्पॉन्सर्ड था। 11th 5-year प्लान से लेके ये स्टार्ट हुआ था और 12th प्लान पे जाके ये NRHM से म्यूचुअल हो गया था। 2007 में पायलट मोड में ये आया जो 25 डिस्ट्रिक्ट में हुआ, उसके बाद में फिर ये 192 डिस्ट्रिक्ट्स में गया,
12th प्लान और उसके बाद फिर 200 डिस्ट्रिक्ट में गया। 2017 तक ये सारे डिस्ट्रिक्ट में फैल चुका था। Objectives of the programs: to prevent the avoidable hearing loss on account of disease or injury, early identification, diagnosis and treatment of ear problem, responsible for hearing loss and deafness, to medically rehabilitate persons of all age groups suffering with deafness, to strengthen and exciting intersectoral linkages for continuity of the rehabilitation program for persons with deafness, to develop institutional capacity for ear care services by providing support for equipment and material and training personnel. Long-term objective: to prevent and control major cause of hearing impairment and deafness so as to reduce the total disease burden by 25% of exciting burden by the end of 12th 5-year plan. Now, components of the program. There are 4 types of components of the program. First one is that manpower training and development for prevention, early identification and management of hearing impaired and deafness cases. Training would be provided from medical college level specialist ENT or audiology to grassroots level workers. Capacity building for the district hospital, community health centers and primary health centers in respect of ENT audiology infrastructure, service provision, early detection and management of hearing and speech impaired cases and rehabilitation at different level of healthcare delivery system. Awareness generation through IEC BCC activities. For early identification of hearing impaired, especially children, so that timely management of such cases is possible and to remove the stigma attached to deafness. Strategies: to strengthen the service delivery for ear care, to develop human resource for ear care services, to promote public awareness through appropriate and effective IEC strategies with special emphasis on prevention of deafness, to develop institutional capacity of the district hospitals, community health centers and primary health centers selected under the program. Expected benefits of the program. The program is expected to generate the following benefits. First one is that availability of various services like prevention, early identification, treatment, referral, rehabilitations, etc. For hearing impairment and deafness as the primary health center, community health center, district hospital largely cater to their need. Decrease in the magnitude of hearing impaired persons, decreases in the severity or extent of ear morbidity or hearing impairment, improved services network referral system for the persons with ear morbidity, hearing impairment, awareness creation among the health. So this is the benefits of these programs. Thank you.